वालेकुम अस्सलाम। कितने लोगों ने आपको 7-0 रिमाइंड कराया वर्ल्ड कप और 8वां मैच, कितनी उम्मीद है कि जीत कर वो रिकॉर्ड जिंक्स ब्रेक करेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो पास में जो गुज़र गया उस पर ज़्यादा मैं फ़ोकस करता नहीं हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो आने वाली चीज़ है उस पर फ़ोकस किया जाए। ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए और कोशिश करते हैं कि उसको ब्रेक किया जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल अच्छी परफॉर्मेंस दें ऑन द डे। डिपेंड करता है ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं और मुझे पूरा बिलीव है मेरी टीम काफ़ी अच्छा करते आ रही है फर्स्ट 2 मैचेस में और इंशाल्लाह अगले मैचेस में भी अच्छा करेंगे। Is it a game where the result of the match plays psychologically very important, or what have you told your boys about it? To be honest, yes. India-Pakistan match is big game. Is high intensity game. So बस यही बोला है कि give us best opportunity. अपना दो जो बेस्ट है आपका, जो आप करते आए हो, जो हमारा बिलीव है एज अ प्लेयर एज अ टीम, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान्स। और मेन चीज़ है प्लान एग्जीक्यूट करें और बिलीव रखें। बिल्कुल अहमदाबाद काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और काफ़ी फैंस लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फैंस के सामने अच्छा परफॉर्म करें और हीरो बने। बाबर, कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, मोस्ट ऑफ योर बॉयज़ आपको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपको जो 2 प्रैक्टिस मैच मिले, इसके बाद 2 लीग मैचेस मिले, तो कंडीशंस को आप कैसे देखते हैं कि कितना डिफरेंट है आपके होम कंडीशन से, और ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला है कमिंग इनटू दिस बिग गेम, ये कितना हेल्प करेगा आपके टीम को? देखें, हैदराबाद में हम तकरीबन 1.5 वीक रहे मोस्टली। देखें, जितना मैंने नोटिस किया हर सिटी का डिफरेंट बिहेव है, डिफरेंट कंडीशन है, सिमिलर नहीं है। कहीं पे ज़्यादा टर्न होता है, कहीं पे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, कहीं बॉलर फ्रेंडली है। तो हर एक स्टेडियम की डिफरेंट जो है वो कंडीशंस और उस हिसाब से हमने अपना प्लान किया। बिल्कुल हेल्प मिलती है जब आप एक जगह पे रहते हैं, फिर आप स्टडी भी करते हैं कि किस तरह क्या कंडीशन बिहेव करेगी, पहले 10 आवर क्या कर रही है, उसके बाद आफ्टर 10 आवर्स बिहेव डिफरेंट होता है। तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि हमने कैसे खेलना है, अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। हेल्प मिलती है डेफिनेटली जब आप एक जगह पर रहते हैं और उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। गुड आफ्टरनून। कहावत है क्या, पेस बॉलर्स कम एज हंटिंग पेयर्स। ओके, सो शाहीन अफरीदी का ऑपोजिट में तो नासिम शाह नहीं रहेंगे। सो हाउ मच विल यू बी फीलिंग हिज एब्सेंस, एंड इवन डिड यू हैव अ वर्ड विथ शाहीन अफरीदी ऑल्सो इन दिस मैटर? पहले तो बिल्कुल नसीम शाह को काफ़ी मिस करेंगे क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था एशिया कप में, वो बड़ी इम्प्रेसिंग बॉलिंग थी और एक यंगस्टर जिस तरह डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा था, तो वो बिल्कुल उसको काफ़ी मिस करते हैं एज अ टीम, एज अ कप्तान। जहाँ तक रही शाहीन की बात, देखें वी नो ही इज़ द बेस्ट बॉलर, ही इज़ चैम्पियन एंड ही नोज। और मुझे पूरा बिलीव है वो बड़े मैचों का बॉलर है और वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मैटर नहीं करता 1-2 मैचेस में अगर विकेट नहीं मिली तो क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं ऐसा कब predominantly, overwhelmingly Indian cricket fans in Ahmedabad. How are you and your players dealing with that kind of pressure, and how do you think that's going to impact your game? This is not a pressure because we are playing before a lot of time in a large crowd, front of the big crowd in MCC and all the big stadiums. Yes, they are also is big stadium, and yes, all sport. I think Ahmedabad is only blue. So if Pakistani fans are allowed, so good for us. So they also help support us. But to be honest, when we are arrive in Hyderabad, so I feel there are a lot of supporter our Pakistan team, and I expect that here, and
we're looking forward to the match. Babar, good afternoon. Just taking a cue from your last answer, in this tournament there have been 6-7 high-scoring, like 350 plus scores, and when pace is one of your strengths, what are the conversation do you have on surfaces like this which kind of get challenging for the fast bowlers? Any conversations that you've had with the Shaheen and others? Look, यहाँ पे जो जितने भी मैचेस हो रहे हैं हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और आई थिंक द मार्जिन ऑफ बॉलर इज़ वेरी लेस इफ़ यू आर बॉलिंग आउट ऑफ द स्टम्प्स सो मार्जिन इज़ less for bowlers. So I just ask my bowlers to just hit the length and bowl stump to stumps. Yeah, that's it. हेलो बाबर, कल की मैच के लिए भारत के कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर आपके लिए चैलेंजिंग लगते हैं आपको? चैलेंजिंग देखें, चैलेंजिंग तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही है. ये नहीं है कि मेरे ख्याल से आप सब और पूरी जो फैंस है और पूरा जो पाकिस्तान इंडिया वो इस मैच का वेट कर रहे हैं, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं. आई थिंक दोनों तरफ कोशिश ये होती है कि जो बेस्ट किया जाए. बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जो उनके टॉप ऑर्डर है उनको देखा जाए कि कैसे हमने उनको आउट करना है और हम कोशिश करते हैं कि अगेंस्ट बॉलर्स रन्स कैसे करने हैं. तो मैटर करता है कि ऑन द डे हम अपना बेस्ट गेम खेलें. आप देखें, प्रेशर हैंडल बिल्कुल आपकी सही बात है, एक्सपीरियंस से आती है. जितना आप इस चीज़ में से गुजरते हैं आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है. एज ए यंगस्टर आप थोड़ा सा फील करते हैं कि जब मैं पहली बार खेला था तो बड़ा प्रेशर था, तो लेकिन ग्रेजुअली आप जैसे खेलते हैं आप सीनियर प्लेयर के साथ शेयर करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इस तरह खेलना है या इस तरह प्रेशर को हैंडल करना है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है. कोशिश यही होती है कि जो भी यंगस्टर या टीम को पॉजिटिव मैसेज दिया जाए. बिल्कुल इज़ द गेम बट बिग गेम पाकिस्तान इंडिया मैच, उसको हैंडल कैसे करना है, अपने आप को जितना काम रखोगे बॉल टू बॉल जितना आप देखोगे. सिर्फ एक चीज़ ये है कि जब फील्ड के टाइम आप बॉल को देखें और बैटिंग के टाइम बस बॉल एट अ टाइम देखो और दैट्स इट. ज़्यादा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ये है कि अपने आप को जितना फोकस रखेंगे उतना प्रेशर कम आएगा. बाबर, आपने ऑन फील्ड दिस साइड बाबर आपने ऑन फील्ड प्रेशर की बात करी, कैसे डील करते हैं, ऑफ फील्ड कैसे डील करते हैं? इट्स अ बिग मैच, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको जीतना है, 7 का आंकड़ा जो है वो ठीक नहीं है. वो हाउ डू यू डील विद दैट? इस चीज़ का तो नहीं, बस बहरहाल टिकटों का बहुत आया. वो बेसिकली आपको पता है कि ये हमेशा इसी चीज़ पे लोग फ़ोन करते हैं टिकटें मिल जाएं या ये इस चीज़ का प्रेशर. देखें, प्रेशर इस चीज़ को हम लेते नहीं हैं. बिल्कुल हम पिच पास में जो है वो हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन हमने 2011 और 2019 में चेंज किया. वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की है और ये भी पहले नहीं हुआ था लेकिन हुआ अब. तो ये इसी पे हम बिलीव रखते हैं कि कर सकते हैं, हमने करके भी दिखाया और कल यू नेवर नो, लेकिन हमारा बिलीव है कि हम कर सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे. बस ये है कि ऑन द डे हम अपना बेस्ट दें. Babar, this is Sakshi from CNN News 18. Since you are here in Gujarat, let's change the mood a little bit. Did you try Gujarati food here? Yes, we are tried, but in the hotel we're not going outside right now. हाय बाबर, यहाँ पे जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था वहाँ पे देखा गया था कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग काफ़ी इजी हो गई थी. आप लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन भी की थी कल शाम में. क्या ड्यू थी और आपको लगता है टॉस एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कल? आई थिंक इस जितने भी मैच देखे हैं टॉस वाइटल है, क्योंकि अंडर द लाइट्स काफ़ी अच्छा पिच बिहेव करता है. बिल्कुल ड्यू थी थोड़ी सी, लेकिन आई डोंट नो, अभी मैच रेफरीज या अंपायर से पूछेंगे कि
स्प्रे होगा कि नहीं होगा फॉर ड्यू, बट लास्ट नाइट ड्यू थी, अंडर द लाइट्स बेहतर खेलता है। हाय बाबर, हेलो। ये ऐसा मैच होता है कि आपके देश में लोग कहते हैं यार कहीं भी हार जाना हिंदुस्तान से मत हारना, और हमारे देश में बोलते हैं यार कहीं हार जाना पाकिस्तान से मत हारना। तो ये ऐसा मैच है कि कप्तानी चली जाती है, तो इस बात का प्रेशर कितना होता है, और आपका खिलाड़ियों को अपनी टीम मीटिंग में क्या आप मैंडेट देते हैं, उनको क्या कहना है? सर एक बात, मैं इस चीज़ पे कभी वो चीज़ नहीं करता कि इस मैच की वजह से मेरी कप्तानी चल जाएगी। अल्लाह ने जितना मेरी लिखी है उतना मैं करूँगा, जितना मेरा अल्लाह पे बिलीव है उतनी मुझे मिलेगी। मुझे एक मैच की वजह से यहाँ कप्तानी मिली नहीं है, या एक मैच की वजह से मुझे मेरी जाएगी नहीं, मेरा इस पे बिलीव है। कॉन्फिडेंस यही है कि जिस तरह हमने 2019 में खेला था T20 में या अभी वर्ल्ड कप में भी, जस्ट ये है कि सिंपल प्लान्स कि अपने आप को बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बेस्ट अपना गेम एग्जीक्यूट करने का मौका है, आप जाके एग्जीक्यूट करें, और मेन चीज़ इस चीज़ को एंजॉय ज़रूर करें। बाबर, आपका खुद का रिकॉर्ड अभी तक ओडीआईज में इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा नहीं रहा है। क्या एक किस्म की बॉलिंग है इंडिया की जिसके खिलाफ आपने थोड़ी स्ट्रगल करी है, एंड क्या ये चीज़ आपके जहन में है ये मैच के पहले कि आपका खुद का रन? मेरा इस वर्ल्ड कप में राइट नाउ अभी तक वैसा जैसा खेलना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आपको डिफरेंट नज़र आएगा। अगेंस्ट इंडिया देखें, हम ओनली जो हैं वो वर्ल्ड कप में ही एक दूसरे के सामने आते हैं, तो काफ़ी गैप है। तो ये चीज़ नहीं है कि किसी बॉलर की वजह से या किसी मैं कहता हूँ कि मैं अपनी मिस्टेक की वजह से कभी कभार आउट होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कम से कम मिस्टेक की जाए। Hello everyone, we have with us Captain Mr. Rohit Sharma. Before we continue, I request you all to put your phones in silent. We'll take one question at a time. Who wants to go first? Samir Hussain from BBC News. You know, you're playing, this is like the biggest rivalry in sports, India versus Pakistan. You're playing in Narendra Modi Stadium, and you're playing to a predominantly Indian cricket fan base. At what point does home advantage actually become a disadvantage? I don't think there is any disadvantage. You know, you feel nice about playing in front of your home crowd. They get behind you, no matter what the situation of the game is. My overall experience playing, not just in India, even outside India, we get massive support. So I've so far never experienced where, you know, the crowd has gone against us or anything like that. So I look at this as a good advantage, big advantage. But we know that eventually it boils down to playing good cricket, and whatever it takes to win the game, you got to do that. So yes, you can use the support, but eventually you got to play good cricket to win the game. Over 100,000 cheering must be the biggest number against, to a team. How will it be? You know, is it a kind of a big boost? And what have you told the boys how to go about it? No, look, you know, all the guys are quite used to playing in front of big crowds. So, you know, like I just said now, it can only work in your favor. It cannot work against you. You know, a lot of the guys in the team loves big crowd, the cheer, the noise in the ground. So, yeah, the boys really enjoy it. You know, like I said, anywhere we go, people turn out in huge numbers, and that is, you know, good for the team and also good for the sport in general as well. Rohit, more than the crowd, I think it will be all the other things that will also matter for an India-Pakistan game. You had earlier spoken about just shutting out the noise. How do you do it? You've shut down your phones? You've not taken to Twitter? No, I'm not on social media for past 9 months now. So everyone has their own way of dealing with it. Some people like it, some don't. But that's not my
place to tell anyone how to do it. They have to work out their own way of dealing with these things. Like I said many a times before, in the context of it, yes, it's a massive game. But for us, what is important is, we are playing an opposition tomorrow, which will be quality. So we just got to, come against a quality opposition and play good cricket, which we've done in the last 2 games. And hopefully we can again, show some consistency in our performance and play good game of cricket. Hi Rohit here. Shubman had a hit at the nets yesterday, so how is he health-wise and is he available for selection tomorrow? 99% he is available. 99% he is available. We'll see tomorrow that. Rohit, you have been a very prominent member of the team in the last World Cup as well. How much has it changed in the last 4 years in terms of mental conditioning, technical preparation in the World Cup? How much has it changed from 2019 to 23? Not a lot, to be honest. I know what are the things that I need to do to find success on the field in terms of me as a player and then me as a captain. But speaking of just the player first, the batter, I think there are certain boxes, for me that I have to tick before every game. It's just to get you that confidence. For me, preparation is very important. And I've spoken at the start of the World Cup that I need to prepare well to get into the tournament. And I thought I've done everything that I can from my side to prepare well for each game. Because we know every day is a new day, fresh day, and you start your fresh day as a new challenge. What you've done in the past, what you've done yesterday, doesn't really matter too much. You can take a bit of confidence from that, but like we know in sport, every day is a fresh day. You play different opposition, they bring you new challenges, and you just got to be ready to face that challenge and confront that challenge. So I think for me as a batter, that is something that I've really focused on, for getting myself ready in however way I can, and whatever it takes for me to get ready for any game. I have to do that, and I've done that really well mentally, understanding my game, which is very important, and I've understood my game, what is my game and what is the team's requirement from my game and from my ability. So I think I try and do all of that to the best of my ability. If it comes out, it comes out. If it doesn't, it's okay. As long as I know that before entering the game, I have ticked all the boxes, I'm happy with that. During the middle of the second innings, it did play a bit of part. So a toss, is it going to be important because of the due now? Honestly, I don't know how much of a factor it is going to be, because in Delhi we were expecting due to come in, it didn't come. Chennai also, it was after probably 30 overs. So you're done with 75% of the game by then. So I don't think toss is going to play a massive factor. It is what the team is comfortable doing, whether it is chasing first, posting a total, whatever that is. Whatever the team is comfortable doing, we try and do that. Rohit, with the success that you had in Chennai with 3 spinners, are you going to do the same tomorrow? I don't know, honestly, I don't know. I still haven't looked at the pitch yet, but we are ready for whatever combination we want to play. That's the challenge going forward for us as a team, depending on what kind of conditions we play in. If there is a change or two we need to make, we will be ready with that.
and the guys have been informed very well in advance about these kind of changes. So I don't think it's going to be any issues with the players, but if the requirement is there for us to play 3 spinners, we will play 3 spinners. नहीं देखो, मैं नहीं समझता ऐसे चीज़ में मैं नहीं बिलीव करता कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज, बिकॉज आपको हर दिन अच्छा क्रिकेट खेलना ज़रूरी है. तो हमारे लिए एज अ टीम ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अभी मैंने बात किया, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, और जो फ्रेश डे है, फ्रेश ऑपोजिशन है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. तो दोनों टीम इवनली स्टार्ट करेंगे. आई डोंट थिंक कि कोई फेवरेट है, कोई अंडरडॉग है. दोनों टीम इक्वली बिफोर दे गो इनटू द गेम, इक्वली दोनों टीम इक्वल है. जस्ट अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर, डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन योर ओन वे, ऑल दिस थिंग्स मैटर. तो आई थिंक हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गेम के अंदर कैसे जा रहे हैं, चाहे पहला बॉलिंग हो या पहला बैटिंग हो, हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं. एंड देन कैरिंग दैट फॉरवर्ड, कैरिंग दैट मोमेंटम फॉरवर्ड इज समथिंग दैट इज क्रूशल. क्या बात कर रहे हो? आंख से आंसू? इमोशनल तो सब होते हैं. इट्स जस्ट देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज़ कि हमारे लिए कल का जो मैच है, एक ऑपोजिशन के सामने एक मैच है. हम उस मैच को वैसे ही देखेंगे जो हमने पिछले 2 मैच को देखा है, और आगे आने वाले मैचेस को देखेंगे. कुछ ज़्यादा या कम सोचने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हम प्रिपेयर करते हैं हर गेम के लिए, हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, और मैसेज भी सारे लड़कों को ऐसे ही होगा. कोई अलग चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं. Okay. Rohit, India has a 100% record against Pakistan in the World Cup. So does that become something like a mill around the neck, a issue of pressure, or does it like become work the normal way? I'm not a person who looks into all that kind of stats. You got to play good cricket on that particular day to win the game. And that is what we will be focusing on, playing good cricket, and how we can play good cricket, which is understanding the conditions, what is required from the team's perspective, and things like that. क्या आप थोड़ा सा रिदम में विश्वास रखते हो कि हमारे जो मेन बल्लेबाज है वो थोड़े से रिदम में आए, बॉलर जो है जिनको आपने ट्राई किया वो भी थोड़े से रिदम में आए? तो पीछे देखने की बात नहीं है, लेकिन ये रिदम में आप विश्वास रखते हो? जी बिल्कुल, ये रिदम काफ़ी ज़रूरी है. उसको अगर दूसरे टर्म में आप देखोगे तो मोमेंटम बोला जाता है. हमारे जो बॉलर्स है, पिछले 7 या 8 मैच जो हमने खेले इंडिया में, और उसके पहले श्रीलंका में, और यहाँ पे भी 2 जो मैच खेले वर्ल्ड कप के, बॉलरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. वेदर इट इज़ स्पिनर्स और सीमर्स, दोनों ने जब उनको मौका मिला है प्रेशर डालने के लिए बैट्समैन के ऊपर, उन्होंने प्रेशर डाला है. कोई मैचेस थे जहाँ पे हम लोग के ऊपर प्रेशर डाला गया था, जैसे राजकोट में ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बनाए, तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया था. तो ऐसे मैचेस होते रहते हैं जहाँ से आपको सीखने भी मिलता है काफ़ी चीज़, और हमें भी, हमारे बॉलर्स को भी काफ़ी सीखने को मिला उस गेम से कि हमने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं किया जो हमने 350 रन बनवाए. तो उस चीज़ों के बारे में हम बातचीत करते हैं कि कैसे उसमें सुधार लाया जाए. और बैटिंग में भी मैं यही कहूँगा कि सारे बैट्समैन ने रन बनाए पिछले 8 या 9 गेम्स जो हमने खेले, ऊपर से लेके 8 नंबर तक सारे बैट्समैनों को बैटिंग मिला है, बैट्समैन ने रन बनाए. तो ऑल इन ऑल आई थिंक वो जो रिदम की बात है,
सारे लड़के रिदम में है, अच्छे रिदम में है, and it is always nice to go into any World Cup game with that kind of rhythm and that confidence. So I think वो जो momentum और rhythm की हम बात कर रहे हैं, I think सारे लड़कों के पास है फिलहाल. यहाँ you have choice of both kind of wickets at this ground, black and red soil wickets. As a captain, as a team, what kind of wicket you will prefer, black soil or a red soil? If given a choice, what would you prefer to play on? See, that's the good thing about this team right now. It doesn't matter what wicket we play. We come here knowing that this is the wicket. I don't decide what wicket we need to play. Whether it is black, we've got guys who can adapt to those kind of conditions. Red soil, of course, we've got again, guys who can adapt to those kind of pitches, because these are all Indian cricketers and they've played in all of these conditions. So I don't think, as captain, what I prefer playing on any kind of conditions, because it is something that we have done really well over the last few years as a team, and we've got the guys who can adapt to different kind of conditions as well. So that is something which gives us confidence as well, going into any sort of conditions. So whether it is spinning pitch, seaming track, flat pitch, we've got the guys who can do the job for us.